So each and every exercise is important. Try to remember exercise. Next, you have to put your feet down. Slowly up, slowly back. Again down, slowly. Up, back, down, up, back, down. Last time up, back, down. Relax. Next. Then we'll move to shoulder. Both hand forward rotation 10 times. Slowly. Keep your hands like both hands. Both hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Again, both hands backward rotation. Again, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Next. You have to bend forward slowly. Keep your legs straight. Can you touch the ground? Without bending knees. Very good. Stay there. Very good. Down, down, stay. Very nice. Yes. Slowly up. Slowly. Now you have to bend back. Slowly. Make your balance. Two hands in between. जितना हो सकता है मुझे करना है, किसी ने गिरना नहीं. Very good. Stay there, stay there, stay there. Yes. Slowly up. Again down. Yes, slowly up. Back. Yes, relax. Next. लोग जब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, साइड बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं, तो काम तो चल रहा है, होता है, बहुत सारी साइड you have to turn to your left side, your left side. Both hand at shoulder level. जितना जा सकते हो जाइए. Very nice. Slowly right side. Stay there. Turn to right. Yes, slowly left. Very nice. Slowly right. Yes, relax. Hands down. Next. Knees. Knees very important. And remember, the movement of your knee joint, natural movement. Okay. So sometimes कुछ लोग पहले ऐसा करते थे. This is wrong. Okay. So when you will do exercise only straight. So you have to sit slowly and up. Now keep your back straight. Keep your back straight. This is like squat. You can put your hand forward, down slowly. Every exercise you have to do slowly. We'll do together. Exact time. Ready? Start. Now. Very nice. Yes. Up. Down. Up. मैं easy लेने वाला चिंता नहीं. Okay. Next. Then last ankle.
Ankle rotation, right leg पहले लेंगे, clockwise, ankle rotation 10 times. Moving circular, slowly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, इसलिए आप भी बहुत ही तालियां बजाओगे. 3 times big clap. We start. First you have to stand on your left leg, hold your right leg, make your balance slowly, join your hands. Down. Hold your position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Yes, up, relax. Next is last asana, standing position, Trikonasana. For that we have to take resonance with legs. Right hand, you have to touch to your left leg and left hand up. And again, right hand, you have to touch to your left leg and left hand up. And you have to go into position. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. Now opposite side. Last time. So, yes, take your position. Keep your legs straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Standing position done. Now you all are in the sit down. See, this is Sukha. जैसा हम रिलैक्स बैठते हैं, सुखा सुख में। तो कैन यू डू पद्मासन? जो लोग कर सकते हैं ट्राई करो। वेरी गुड। Yes, keep your back straight. One hand straight. I will count only 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yes. One more time. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Next is Paschimottanasana. Now put your legs forward, straight, both hands up. Now you have to bend down slowly. Try to open your fingers. जितना हो सकता है और जिनका इजीली होता है, they have to touch your head to knee. Right. Slowly. Hold the position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, very good. Relax. Yes, one more time. Both hands up. कीप योर लेग स्ट्रेट है। देखो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं करना है। रेडी, स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. Very good. Next is Gomukhasana. Sit in Sukhasana. एकदम इजी आसन है देखने के लिए। एक हाथ ऊपर से लेना है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पीछे से लेना है और एक दूसरे को पकड़ना है। कर सकते हैं, ट्राई करो। दिखने में बहुत इजी दिखता है, आपके हाथ है, आपको ही टच करना है। चलो ट्राई करो। कीप योर बैक स्ट्रेट, जितना होता है उतना करो। यस, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yes, one more time. Gomukhasana. Hold your position. 1, 2, 3. No talking.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Next is Baddhasana. You have to join your legs. एक्सरसाइज करते समय हम इसको बटरफ्लाई करते हैं, लेकिन वो नहीं करना अभी. यस. हाँ, नाउ कैन यू टच योर नीज टू ग्राउंड. कोशिश करो. लेग्स बॉडी के पास लाना है, एकदम क्लोज टू द बॉडी. नाउ कीप योर बैक स्ट्रेट. कीप योर बैक स्ट्रेट. होल्ड योर पोजिशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Yes, one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. नेक्स्ट इज वज्रासन. होल्ड योर लेग्स. सिट कंफर्टेबली. ये एकमात्र आसन है कि जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं. वज्रासन. यस, कीप योर बैक स्ट्रेट. बोथ हैंड. Keep your back straight. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. One more time. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. इसी में एक्सटेंशन है मंडूकासन. दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद कीजिए. यहां रखनी है पेट के पास. दबाओ इसको थोड़ा अंदर. नाउ यू हैव टू बेंड डाउन फॉरवर्ड. कैन यू टच द ग्राउंड स्लोली एंड होल्ड योर पोजीशन. जितना हो सकता है उतना कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As up slowly. Very nice. I'm happy you all are trying to do. Very good. Yes. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. जिनको ये अच्छे से आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं. जिनको आता है वही करना है. सुप्त वज्रासन. इसी पोजीशन में यू हैव टू गो बैक स्लोली स्लोली. और आपको बैक आपका टच करना है. जिनसे होता है वही कीजिए. मैं फिर से दोहरा रहा हूं. थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस लो. उसके लिए पैर में थोड़ा डिस्टेंस लो. हाँ, देखो स्लोली. योगासन में कोई भी जर्क नहीं देना है. यू हैव टू डू स्लोली. और जितना कर सकते हो उतना ही करना है. थोड़ा डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे ना पैर में तो सीट नीचे जाएगा तो फिर आराम से पीछे जा सकते हैं. हाँ. यस, वेरी गुड. यस, अप स्लोली स्लोली स्लोली. वेरी नाइस. चलो एक सिटिंग पोजीशन एक लास्ट करते हैं. थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं. इसका नाम है जानु शीर्षासन. इसमें आपको आपके राइट साइड के लेग को दोनों हाथ से पकड़ना है. बट यू हैव टू कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट ग्राउंडेड. Can you hold your right leg with both hands? Very nice. Yes, stay there.
राइट साइड, राइट लेग, एवरीबॉडी राइट लेग. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Left side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very nice. Sitting position over. Now lying down position. And do it slowly. Especially ladies, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मत कीजिए. Next is भुजंगासन. पेट के बल सो जाइए. रिलैक्स. सफिशिएंट जगह है. हाँ. Now you are to keep your head up. हाथ लगाइए नीचे. ऊपर देखना है. This is very good exercise for back. This is very good exercise for back. अब जितना जा सकते हो. पीछे देखिए. चांद है कि सूरज है? और देखो ऊपर सूरज है, बादल भी है. यस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बैक पेन हो रहा है उसके लिए, लेकिन सब एक्सरसाइज हमारे पास ही है, हम करते नहीं है. और आपको बता दो, कोई मेडिसिन काम नहीं करता. मेडिसिन कुछ दिनों के लिए होता है, बाद में डॉक्टर यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो. चलो वन मोर टाइम. अब भुजंगासन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. इसी में थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं. नाउ यू हैव टू होल्ड योर लेग विथ योर बोथ हैंड. सेम पोजीशन. एंड अब कितना आ सकते हो देखो जरा. धनुरासन. यस, वेरी गुड. यस, वेरी नाइस. खुशी मैडम, यू कैन डू इट. अब देखो आनंदी मैडम कर रही है. क्या बात है दादा, कम ऑन. यस, वेरी गुड. अरे अमृत सर, आपसे नहीं हो रहा है. करो यार, इतना यंग लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा. शाबाश. अप. यस, रिलैक्स रिलैक्स. This is your physical fitness test. Yes, one more time. चलो. And I can guarantee you, if you doing every day these all asanas, 50% बीमारियां खत्म हो जाएगी. Yes, relax. Now you have to change your position. Name is उत्तान पादासन. दोनों आपको पेट के बल लेटना है, दोनों पैर सीधे रखना है और जमीन से सिर्फ 1 फीट या 2 फीट उठाना है और वहां रुकना है. दिखने में बहुत सिंपल दिखता है. हाँ चलो एक बार देख लो, चाहिए तो देखो. थोड़ा से पैर ऊपर उठाने इस लेवल तक बस. और नाउ यू हैव टू होल्ड योर लेग्स. 1 2. वेरी नाइस. 3. बड़े सराव थोड़ा नीचे. बहुत ऊपर हो गया. 90 डिग्री हो गया. 45 डिग्री चाहिए. कीप योर लेग स्ट्रेट. बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. One more time. Yes. Up. थोड़ा ऊपर उठाइए.
your leg, both leg. 1, keep your leg straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, relax. नेक्स्ट, इस पोजीशन में लास्ट, ये जो हम कर रहे थे इसी में आपको दोनों पर 90 डिग्री तक ऊपर ले जाने हैं और होल्ड करना है। अर्ध हलासन देखिए एक बार चाहिए तो। होल्ड योर लेग्स, कीप योर लेग्स स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now we'll start pranayama. Get up. शवासन सबसे लास्ट। चलो, अनुलोम विलोम सभी को पता है, 10 times we have to do. Keep your back straight. Ready? Start. Do it slowly. ज्या दीदी नवीन आहे त्यांच्यासाठी सांगतो की उजव्या हाताच्या अंगठ्याने उजव्या साईडची नाकपुडी बंद करायची, डाव्या नाकपुडीतून श्वास घ्यायचा, मग पहिल्या बोटाने डावी नाकपुडी बंद करायची, उजव्या नाकपुडीतून श्वास सोडायचा, असं कंटिन्यू करायचं। त्याला म्हणतात अनुलोम विलोम। डन, व्हेरी गुड। नेक्स्ट इज भ्रामरी। जसा भोंगा गुंजन करतो तशा प्रकारे आपल्याला बोलायचं है। उसके लिए पहले दोनों थंब कान में लगाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। बचे हुए फिंगर से क्लोज योर आईज, रिमेनिंग फिंगर से आपको आईज बंद करने। एंड नाउ स्टार्ट गुंजन। अगेन, again, yes, relax. Next is शीतली प्राणायाम, एकदम इजी है। ऐसे मुंह करके आपको सांस अंदर लेनी है। हम एक प्रकार से ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ये कूल होके बॉडी में जाता है। लॉन्ग ब्रीदिंग, होल्ड फॉर सम टाइम, देन ब्रीद आउट। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट इज भस्त्रिका प्राणायाम, एकदम इजी है। लंबी सांस लेनी है जोर से और जोर से छोड़नी है। जितना लंबी सांस ले सकते हो उतना अच्छा है। कीप योर बैक स्ट्रेट। यस, रिलैक्स। प्राणायाम में लास्ट है कपालभाति। कुछ लोगों को शायद आता है, चलो देखते हैं किसको किसको याद है। जोर से सांस लेनी है, पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, रेडी, स्टार्ट। डू इट स्लोली।
कितना कर सकते हो देखो, कम से कम टारगेट है मिनिमम 10 का, चलो 10 तो करो। जिनका 10 इजीली हो रहा है गो फॉर 20। गो फॉर 30। यस, रिलैक्स। साल में एक ही दिन नहीं करना है। कल आप बोलोगे सर बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करना है। चलो और एक बार कपालभाति स्टार्ट। यस, रिलैक्स। थोड़ा सा कुछ नया, जैसा बाकी योगासन प्राणायाम सबको पता ही था जो आज आपने किया था। हम लोग आइस से बहुत कुछ काम लेते हैं, बिना आइस से तो कुछ होता नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, सब एक्सरसाइजेस आर देयर। उसको योगा का नाम नहीं दूंगा मैं, त्राटक लास्ट में करेंगे। फॉर आइज, चलो कीप योर आइज ओपन वाइड। ओके, नाउ यू हैव टू सी टू योर लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट साइड, ये मेरा हो गया, ये आपका साइड। जितना जा सकता है देखिए वहां पर। स्लोली राइट, नो बॉडी मूवमेंट, ओनली आईज मूवमेंट। स्लोली लेफ्ट, अगेन राइट। कोशिश करो कि आंखें नहीं झपकनी है, ओपन ही रहनी चाहिए। करते रहिए। 5 टाइम्स लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट। डन। नेक्स्ट, इसी में वेरिएशन। आपको अभी नीचे देखना है, जितना देख सकते हो। स्लोली ऊपर देखना है। कीप योर आइज ओपन। अगेन डाउन, अप, डाउन, अप, रिलैक्स। इसमें लास्ट सर्कुलर मूवमेंट, पूरा सर्कल में आपको देखना है, आंखें घुमाने हैं आप। पहले नीचे, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे। स्लोली 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। Yes, done. Relax. Now shake your hand. Keep on your eyes. Again, rub your hand. Keep on your eyes. Yes, relax. एक लास्ट आइज के लिए, एक और एक त्राटक। एक राइट हैंड का थंब ऐसे आगे कीजिए। कीप योर आइज ओपन, क्लोज नहीं करनी है, कोशिश करो। कौन ज्यादा देर तक देख सकता है इसको? बिना आंख बंद किए। अगर बंद हो भी जाती तो फिर से स्टार्ट करो। थक गया हो? यस, रिलैक्स। एक थोड़ा सा नया इंट्रोड्यूस करना है फॉर स्पेशली लेडीज, फेस योगा। सुना है किसी ने? चलो थोड़ा कर भी लेते हैं।
It is good for your face. जितनी हवा भर सकते हो भरो. You have to hold for some time. Yes, relax. One more time. Now same, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड. बच्चों के सामने मत करना. नाउ ओठों को अंदर लेना है. खींचो, गालों को भी अंदर खींचो. Yes, relax. Last part, ध्यान. Sit in Sukhasan, keep your back straight, close your eyes. We'll start chanting Om. Only 5 times. Ready, start. Next. Take long breath. Start. Last time. यस, लास्ट आसन जो सबको चाहिए था, कौन सा है? शवासन. यस, लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, पूरा बॉडी रिलैक्स, नो बॉडी मूवमेंट, क्लोज योर आईज. दीदी एकदम सोपा आसन आहे, काही करायचं नाही. डोळे बंद, नो बॉडी मूवमेंट, मन में कुछ भी विचार नहीं लाना है. नो टॉकिंग.
ये आसन ये आसन सभी लोग बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। वेरी गुड। यस, अभी उठते समय थोड़ा लेफ्ट साइड में टर्न हो गई, सीधा नहीं उठना है, स्लोली अप, rub your hand, put on your eyes. Now you have to look towards green trees, green grass. नेचर के साथ रहना है. Yes, I hope you all are enjoying this session. Thank you very much, Deepak sir. Now it's not my session. Don't worry. There is very nice yoga in Sanskrit. Atha yoga anushashanam yogasya chitta nivritti shakti samadhane samabhutam niryoge kshama atmavana. Actually, this is the target of yoga. It is said Atha yoga anushashanam. This is the process of yoga. What? Yogasya chitta nivritti. Until and unless you cannot settle yourself, inner self, you are not doing yoga at all. These are just the exercise positions and this and that. And then it's move forward that Shakti Samadhane Samabhutam. Until and unless you cannot control your own consistency. You're not, brain is never willing for all such difficult things, because brain loves to be in the comfort zone. You tell yourself in the morning to walk for 5 kilometers, brain will deny. Let us relax, let us sleep for 5 minutes more because it is Sunday. Brain will convince you, but you have to convince the brain. Okay, not 5 kilometers, 2 kilometers. At least wake up and leave the bed. Still, brain will say okay for 2 minutes. And we listen to the brain, but we have to see, brain has again two thoughts. So we have to conquer over the positive thought. And what is difficult is will not be accepted by brain. So we have to do that. Simple asanas which you know, this is Sukhasana. Brain likes that. Okay, when you go to this is Padmasana. Let us try one more time. Then we'll continue with in the same position, third asana. Okay, try this. This is Padmasana. If you do once, twice, you will feel like yes, we can do. And the ones who are not doing also will be able to do if it is continued for every day or at least 5 days a week. Okay. Next, we can continue with the same Tulasana. In Tulasana, Tula, have you seen the image, the symbol of Tula Rashi? Tula, yes. So it is balanced.
then try lifting your body as much as possible. Do it slowly and try to hold your breath. एकदम गट्टी से नीचे नहीं गिरना है. Try, you can try. This will keep your spine flexible. More is the flexibility, longer is the life. Of course, inner organs, that is heart, lungs, kidney, liver, everything is important. But what can we do for that? For lungs, for heart, we can do pranayama, breathing exercises, which you know all. So this is Chakrasana. Chakrasana will help you to keep your spine healthy. And every time you feel like there is some stiffness in the body, we say Jakran Agaya. That stiffness can be removed. Okay, then as there are so many animals, you know, let us try one asana again if possible. Whatever possible we do. You know, you tell your children frog jump, lion walk, you say or not? Okay, there is one animal on which the name of the asana has become Bakasana. The like the bird, you are walking on this. Okay, yes. Try. In this case, it is possible that you may fall down, but we have a soft mat, so no issue. And you have to take your legs up. Buck or any bird does not have 4 legs, it has only 2 legs. Suman is trying. She is trying for half a second. But if you try balancing, it is possible. See, I am not very expert. I am a school teacher basically, and I am sitting in the chair, so you look at me as a principal. But if you do this, it is possible. Weight has no relation with this. Okay, then one more asana, like a bird only, we can try. That is Mayurasana. In Mayurasana, what happens? Your position is not like the bird, it is like the peacock. Peacock, the nails and the fingers are like this. Like peacock, let us try. Again, in this case also, it is possible that you may fall down, but we can try balancing. Look at me and just try. You can give the support of your elbows to your stomach. Yes. Elbows should go in the stomach. This way. Okay. So if you take one position and do three asanas, it is possible. It is not highly difficult. Okay, but morning what happens? We are all rushing to the school, and the asana that we like always is Shavasana. The ones who like Shavasana are coming late. So I had to write an email to all of them. If you are late, okay, be late, but be out of gate. Let the national anthem get over, let the assembly get finished, then come. Then
liking for Shavasana reduced to some extent. Okay, but see, in morning, if you're feeling happy, fresh, energetic, forget about happiness, but energetic, then you can say that you are healthy. At least your brain is healthy, or you are stressless, living life stress-free. But in morning, if you feel exhausted, tired, you should feel fresh. If you're not feeling fresh, means your body is indicating something to you. Please listen to the body. One teacher told me, pain in body somewhere. What is pain? Pain is the indication. It is not a disease. Pain is the indication that body wants to say something to you. Okay, if my stomach is paining, my knee is paining, it is just an indication from the body there is something wrong in the system. Maybe knee pain, there is something wrong in the system, something wrong in the stomach, something wrong in the head. So the pain shows that. And what happens? We take medicine. Which medicine? Painkiller. So what we are doing? We are removing the symptom or suppressing the symptom. We are not treating the illness. So to treat the illness, we must go to the root of the illness so that for a longer time, that illness does not come to you again. You know, the pharmacist, now they are called pharmacists, but if you see their certificate, they are written there, chemist and druggist. Maybe Bharat Medical, India Medical, whatever. Into bracket, below that the name of the owner. Into bracket, chemist and druggist. Medicine is something which you take, and after a long time, for a long time, you are not required to take the same medicine again. That is medicine. That cures. Medicine is something that cures. And medical store all the times does not have medicine, they have drugs. So the owner, the licensee is called chemist or druggist. What he is selling? He is selling chemicals. He is selling drugs. Like somebody from our group does not get proper sleep, sound sleep. So the teacher or the person, what is he or she taking? Amitriptyline. What is amitriptyline? It is antidepressant. What is that antidepressant? It will cure your depression. It will compel you to sleep at night. Similarly, clonazepam, atizolum. This zolum category में बहुत सारा झूठ है. It's very clear. Okay, they are called zolum. You read the names, you will come to know the groups. Okay, and they are not the medicines, they are the drugs. And if you are addicted, or if your doctor is expert, is another point. If you are addicted, then for a long time you have to take. If your doctor is expert, he will taper down the dose and he will bring you to the normal sleep pattern. Because in Ayurveda and in yogic science, it is said ahar, vihar and आराम. आहार, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए. विहार, आपको एक्सरसाइज करनी है, घूमना है, शतपावली, वॉक, मॉर्निंग, इवनिंग, वॉटएवर करना है. आराम, यू मस्ट हैव साउंड स्लीप. तो हमारी पूरी बॉडी, माइंड एंड द बॉडी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आहार, विहार एंड आराम. आराम ऑल्सो इज वेरी मच नेसेसरी. लेकिन आराम हमें ऐसा फील होता है कि आज छुट्टी है तो आज आराम, लेकिन वो आराम होता नहीं है. स्क्रोलिंग ज्यादा होता है. इवनिंग में आफ्टर टेकिंग डिनर वी फील फ्रेश. We scroll YouTube channel, we watch TV. That time we feel fresh. And in morning, when we wake up, we don't feel fresh. Why this happens? It shows that you are not in the sync with the nature. Nature, everybody wakes up. The animals, birds, all will wake up in the morning, and in the dark, in the evening, all will sleep or all will be at peace. They will not eat food. We don't follow that. That's the reason that we have affected our body and mind.
Okay, now the main reason is if you don't have time, there are some other exercises with which I will conclude. Okay, so, such exercises are just 1 minute, 60 seconds exercise. Okay, let us stand, understand that if possible do, you will start from today or tomorrow. It is possible another day you will discontinue, but again continue the next day. Again you will have some problem, you will have to travel somewhere, again you come back, again you start. So don't think that I am not continuing. You are continuing. There are breaks in between. Consider them as not discontinuation, but consider them as breaks. Okay, 60 minutes exercise, standing exercise, and we will close. Thank you. All. In this exercise, what you are doing, you all know Surya Namaskar, so I will not repeat that. In this exercise, there are 2-3 Vrishik Danda, Viparit Vrishik Danda, Hanuman Danda. So let us try Hanuman Danda. All hands down. Both hands down. Like this one. Yes. Now see your left hand and your left knee, and you will look at left knee this side. Okay, then get up. Try that. Knee should not touch. Don't relax. Now look at the left knee. 1. Change the position. Now look at right. 2. Yes. Look at left. 3. Now do fast. Do, yes. टाइम नहीं ना तो 60 सेकंड 1 मिनट का है. टाइम है तो ये करो, है ना? यस, आज सीख लो, कल कर लो. दूसरा होता है वृश्चिक दंड. देख लो, कर सके तो कर लो. सिंपल है. दिस इज जस्ट लाइक पुशअप्स. One leg up, will go down, come up. Okay, then opposite direction. Simple. One leg down. Try. Yes. Try. Yes, very good. Okay, now विपरीत वृश्चिक दंड. इसमें क्या करना है? You have to touch the feet, touch the toe to the ground of the leg, opposite leg. One, this way. 2, 3. Right. इसमें से सब डिफिकल्ट लगता है. If you find all difficult, simple. Everybody just stand, hands up, and then you will bend your forehead to the knee. You have to exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay, 10 times. Ha. Say ha. 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 क्रांति सर ओके फाइन. कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक करो. एक तो प्राणायाम करो, एक तो योगासन करो. योगासन में सिटिंग करो, स्टैंडिंग करो, और दो एक्सरसाइज. कुछ नहीं होता है तो इफ यू डू 10 times और if you take it to 20-30 times, in 1 minute you will start breathing high, you will start gasping,
and you feel little giddiness because your blood flow is going to the brain, you know, moving down. See somebody in the assembly, they feel giddiness, they fall down. So what is the first remedy? If somebody is falling down, let him lie down, let him sleep. So what happens? The blood flow which is not going to the brain will go to the brain. And you see in most of the cases, in hospitals, some beds are inclined. Okay, legs will go up so that brain flow is regularized. Okay, this is all for today, and it is not for today. It is just an introduction. We can start with some of the yogic exercises. Thank you. Do you remember a word I used? Astonishing. Hope you astonished. I was really surprised, not surprised, as the principals has talked, and I talking about the Nature Cure Institute degree. That is, do you remember? What is it? Diploma in Natural. So everything is reflected from the demonstration to the explanation. You know, every depth of yoga, actual yoga is touched by this. On behalf of all staff, sir, I really thank you. Now it's time to, move to the last segment of the session, yoga session. And every program ends with thanking. So this is the time for the vote of thanks. I request Honorable our sport tutor, Malvika ma'am, please. Good morning everyone present here, respected principal sir, vice principal sir, AO sir and all my dear teachers and didis. Today we gathered to celebrate International Yoga Day and it was an enriching experience for all of us. I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who made this event possible. To our chief guest, Principal Sir, thank you for sharing your inciting and expertise on yoga. Your presence added immense value to our celebration. To our yoga instructor, Mahajan Sir, your guidance and teachings help us understand the benefits and significance of yoga. We appreciate your time and effort. To our teachers, your enthusiasm and participation made this event a success. We hope you benefited from the yoga session and will continue to participate in yoga in future. To our organizing committee Didis, thank you for your tireless efforts in organizing this event. Your dedication and hard work ensure a smooth and enjoyable experience for all. Lastly, to everyone who attended and made this event a success, thank you for your presence and participation. Let's continue to promote the benefits of yoga and make it a part of our daily lives. Thank you. Okay, we'll sing together. Ready? 1, 2, start. अधिनायक जय हे भारत भाग्य अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत
विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। With the permission of principal sir, I declare today's program is over. Thank you.